Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, we all knew it before that in March 2020 new edition of DSM would be announced, and it is known as DSM-5-TR. So there are certain questions attached to this edition, like what sort of changes have been made in this DSM, what are the certain facts about DSM 5th TR, and what sort of shortcomings were there in DSM 5th. So along with that, many students are thinking whether they have to buy this new edition or not, or should they just stick to that previous DSM 5th. So these are the questions I am going to answer in this video. So you have to watch this video till the end to get your all concepts clear. Let's move toward the content. So first of all, we must know the abbreviation of DSM. DSM stands for Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, and we were using Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders edition 5th, and now we have DSM 5th TR, that stands for Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders edition 5th text revision, and in short we say it DSM 5th TR. So DSM is basically used by psychologists and mental health practitioners. Basically, it has all the diagnostic criteria which help the psychologist to identify the disorders along with the prevalence, diagnostic factors, cultural and ethnic factors. So it's basically a manual that provides the criteria for mental disorder depending on the time period and the duration. So if we talk about the history, there is a long history related to the concept of mentality, concept of normality and abnormality. Like the insanity concept was there even before post World War II, and even there were a consensus taken place to discriminate the people whether they are abnormal or whether they are normal. So there were certain disorders that were under consideration of psychologists. But if we talk about the history of DSM, American Psychological Association has introduced the first edition of DSM in 1952. Firstly, the clusters of mental disorders were just added to ICD, that stands for International Classification of Diseases. It is a manual that is basically used by doctors, but that classification, that first edition had been introduced in 1952, and the second edition had been introduced in 1980s, and the fourth one was in 1994, and the fifth had been introduced in 2013. Keep in mind these additions were given even after a lot of considerations, after a lot of research, but there were certain shortcomings, and even every new addition came after considering the new trends or new issues or new cultural or ethnic backgrounds, etc. So we must say that a lot of work, a lot of research or literature review had been focused while introducing the new edition, and even the group of people have worked a lot behind these editions to give us proper diagnostic criteria, proper research about the prevalence, like which disorder have what sort of percentage in specific location or specific area, and what about the duration of particular disorder. So we can say that a lot of work or research had been there after every new edition. And now the official release of this DSM 5th text revision has been decided on 18th March 2022, and students are obviously placing online orders to book their manuals, and after a few days it would be available in the market everywhere in the world. According to Michael B. First, who has worked as co-chair of revision subcommittee of DSM 5th text revision, he has also worked as an editor for DSM 5th text revision.
he said that why we have made certain changes or why we have updated DSM 5th to DSM 5th text revision just because to modify the criteria for more than 70 disorders. Along with that, he said that we have updated descriptive text for the majority of disorders based on the literature review. As we all know, all the editions has just reviewed or edited or updated on the basis of literature review, and he further said that comprehensive review has been made to assess the impact of racism and discrimination. As we all know, there is a particular heading even after diagnostic criteria that indicates cultural related issues. So most of the researchers found that basically more discriminating, or sometimes it has manifested different racism concepts. That's why this specific heading has been updated to eradicate the impact of racism and discrimination. As we all know, 9 years have passed since publication. As I have told earlier that DSM 5th edition was published in 2013, and that text basically became outdated and suspectable on the basis of scientific basis or scientific literature. So specifically, risk and prognostic factors were totally outdated along with diagnostic markers. Like diagnostic markers basically indicates what are the different criterias for mental disorders. So viewers, I am sharing the important changes in DSM 5th TR और वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट स्लाइड्स में, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चेंजेस बताने जा रही हूँ. द फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ग्रीव डिसऑर्डर. प्रोलॉन्ग्ड ग्रीव डिसऑर्डर को ऐड किया गया है DSM में. न्यू सिम्टम कोड्स फॉर सुसाइडल बिहेवियर एंड नॉन सुसाइडल बिहेवियर हैज बीन एडेड इन DSM. ओवरऑल ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इनको भी कंसिडर किया गया है और इनके भी कोड्स असाइन किए गए हैं. द थर्ड वन इज एडिशन ऑफ अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर. अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर को ऐड किया गया है DSM में. अलॉन्ग विद दैट अपडेट्स टू द टर्मिनोलॉजी को अपडेट किया गया है और वर्ड न्यूरोलेप्टिक को रिमूव कर दिया गया है. सिर्फ न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम में इस्तेमाल होगा जो कि न्यूरोलेप्टिक malignant सिंड्रोम है. अदर देन दैट जहाँ जहाँ न्यूरोलेप्टिक वर्ड था उसको हटाकर डिफरेंट अल्टरनेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है. सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ जेंडर डिस्फोरिया. देयर वर वेरी इश्यूज रिलेटेड टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ जेंडर डिस्फोरिया और उनको चेंज करके अल्टरनेटिव टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं. 2 डिसऑर्डर्स हैव बीन रीनेम्ड. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को और कन्वर्जन डिसऑर्डर को रीनेम किया गया है. आई विल डिस्कस दीज नेम्स इन द अपकमिंग स्लाइड्स. द लास्ट वन इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें फिर से ओवरऑल सब डिसऑर्डर्स के डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज को देखना होगा क्योंकि मेजॉरिटी में अगर हम देखा जाए 70 डिसऑर्डर्स के क्राइटेरियाज को चेंज किया गया है. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैव बीन रिवाइज्ड फॉर सेवरल डिसऑर्डर्स. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि ओवरऑल क्यों ये चेंजेस की गई हैं. नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट और नोटवर्दी एडिशन है प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर. प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर बेसिकली बहुत ज़्यादा रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद ऐड किया गया है. और बेसिकली प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर क्या है? एक पर्सन नियर वन की डेथ के बाद अपनी लाइफ को नॉर्मली नहीं गुजार सकता, यानी वो उस ग्रीफ से निकल नहीं सकता जिसकी वजह से उसकी डे टू डे फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है. ऑक्यूपेशनल हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है. ओवरऑल उसकी लाइफ जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है. वो ओवरऑल इनेबल होता है अपने आप को मूव फॉरवर्ड करने में. सो according to research, 1 in 10 bereaved adults are at risk of developing prolonged grief disorder. So this was the important addition that has been made in DSM.
न्यू सिम्टम कोड्स फॉर सुसाइडल बिहेवियर एंड नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, ये कोड्स ऐड किए गए हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ साथ आपने इन बिहेवियर्स को भी असेस करना है। ऑल्दो दीज टू बिहेवियर्स आर नॉट इन इटसेल्फ मेंटल डिसऑर्डर्स, लेकिन ओवरऑल ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट में हेल्प आउट कर सकते हैं कि पर्सन का जो बिहेवियर था अपने आप को हार्म करने का था। अगर हम सुसाइडल बिहेवियर की बात करेंगे, सुसाइडल बिहेवियर में इंटेंट होता है आपके एक्शन का कि आप अपने आप को मार दो और डेथ की तरफ लेकर जाओ। लेकिन अगर हम नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ सेल्फ हार्म होता है, लेकिन इंटेंशन ये नहीं होती कि आप डेथ आपकी हो जाए या आपको ओवरऑल आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। सो ये कोड्स असेस करना भी ज़रूरी है ताकि ट्रीटमेंट प्रोसेस में आसानी हो सके। Suicidal behavior and non-suicidal self-injury codes appear in section 2. As we all know, अगर हम स्टार्ट में देखें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में सेक्शंस जो हैं वो मेंशन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो कह रहे हैं कि सेक्शन 2 में ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंडर अदर कंडीशंस दैट मे बी फोकस ऑन क्लिनिकल अटेंशन, यहाँ पे ये कोड्स जो हैं वो डिटेल में मेंशन है। अच्छा, सुसाइडल बिहेवियर सिम्टम कोड एंड नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी सिम्टम कोड्स हमें इस चैप्टर के अंदर मिल सकते हैं। द नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर। अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर की नाम से ही हमें इंडिकेट हो रहा है कि ऐसे सिम्टम्स जो कि टोटली मिक्स्ड हों, जो जिनकी समझ ना आ रही हो, उनको अलग से कैटेगराइज किया गया है अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर में, जिसमें क्राइटेरिया ना मीट कर रहा हो या समटाइम्स एक मैनिक और डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं हैं। सो सिम्टम्स जो हैं वो मिक्स्ड हैं, दैट्स वाई वो कैटेगराइज कर दिए गए हैं अलग से एज अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर। सो सिंपली हमने अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर को ऐसे याद रखना है कि ओवरऑल ऐसे सिम्टम्स जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स के क्राइटेरियाज को मीट ना कर रहे हों बट स्टिल दे हैव सिग्निफिकेंट एंड एबनॉर्मल चेंजेस इन मूड, इसी वजह से इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंट अपडेट्स टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया को अगर हम समझना चाहें तो ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन ओवरऑल डिससेटिस्फाइड फील करता है अपने जेंडर से, और स्पेसिफिकली जो उसका बायोलॉजिकल सेक्स होता है या बायोलॉजिकल जेंडर होता है उसके और उसकी आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स एंड देयर जेंडर आइडेंटिटी। इसके अलावा सेंस ऑफ अनईजनेस, सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस, और ओवरऑल वो डिससेटिस्फाइड होता है कि मेरा जो जेंडर है और मेरी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, एनजाइटी भी, और डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे अपडेट्स जो हैं वो टर्मिनोलॉजी में की गई हैं। डिजायर्ड जेंडर को अब चेंज कर दिया गया है एक्सपीरियंस जेंडर में। अब ये टर्म इस्तेमाल की जा रही है DSM 5th टेक्स्ट रिविजन में। अलॉन्ग विद दैट क्रॉस सेक्स मेडिकल प्रोसीजर, जो मेडिकल प्रोसीजर यूज़ किया जाता है ताकि अफर्मेशन हो सके एक पर्सन की ओवरऑल जिस जेंडर में वो रहना चाह रहा है, उस प्रोसीजर को नाम दे दिया गया है जेंडर अफर्मिंग प्रोसीजर। The third one is term natal male or female is now individual assigned male or female at birth। अब ये टर्म इस्तेमाल की जा रही है individual assigned male at birth और individual assigned female at birth। ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो अपडेट की गई हैं। The next is new names for two disorders. Two disorders are basically renamed. Intellectual disability is now intellectual development disorder. Intellectual disability is now intellectual development disorder, and conversion disorder is now functional disorder. Conversion disorder is now functional disorder. The next is diagnostic criteria have been revised for several disorders. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरऑल मेजॉरिटी या 70 डिसऑर्डर्स के डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज रिवाइज्ड हुए हैं। तो हमें DSM को, इस DSM को थॉरली देखना होगा
ओवरऑल इसके टेक्स्ट को, क्योंकि रिस्क, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, कल्चर रिलेटेड इश्यूज, जेंडर रिलेटेड इश्यूज, प्रिवेलेंस, इन सब के टेक्स्ट को रिवाइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर एंड रिसर्च। तो हमें थॉरली डीएसएम को दोबारा से पढ़ना है और चेंजेस को अडॉप्ट करना है, और साथ साथ हमें इन सब चेंजेस को याद भी करना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस जो आई हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज में वो हैं जी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मैनिक एपिसोड, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, persistent depressive disorder, PTSD in children, avoidant restrictive food intake disorder, delirium, substance medication induced mental disorders and attenuated psychosis syndrome, जो कि चैप्टर कंडीशंस फॉर द फर्दर स्टडी के अंदर मौजूद है। सो ओवरऑल हमने DSM 5th टेक्स्ट रिविजन को डीपली पढ़ना है, डीपली थॉरली इनको इन सब डिसऑर्डर्स को गो थ्रू करना है, ताकि हम जो भी चेंजेस हो चुकी हैं उनको समझ सकें और उनको अच्छी तरह से याद कर सकें। The next is new codes and coding nodes have been updated for substance use and neurocognitive disorders. Along with that, word neuroleptic won't be used except in the case of neuroleptic malignant syndrome. इस disorder और syndrome के अलावा बाकी हर जगह से neuroleptic word को टर्म को एक्सक्लूड कर दिया गया है। उसकी जगह एंटी साइकोटिक मेडिकेशन और अदर डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, और इसके साथ साथ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डिफरेंट टर्म्स को यूटिलाइज किया गया है। देयर वाज अ क्रिटिसिज्म कि न्यूरोलेप्टिक टर्म जो है वो इटसेल्फ खुद उसके साइड इफेक्ट्स को भी प्रेजेंट कर रही है, तो इट्स बेटर टू यूटिलाइज अल्टरनेटिव टर्म्स फॉर न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशंस। न्यूरोलेप्टिक बेसिकली ओवरऑल कह सकते हैं कि ऐसी मेडिकेशंस जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करती हैं या डिस्टर्ब करती हैं टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स। एंड द लास्ट वन इज चेंजेस इन द स्पेसिफायर्स। स्पेसिफायर्स जो है चेंज किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आ रहा है मूड कॉन्ग्रेंट, मूड इनकॉन्ग्रेंट स्पेसिफायर्स फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में फर्दर चेंजिंग्स हुई हैं स्पेसिफायर्स में मूड कॉन्ग्रेंट, मूड इनकॉन्ग्रेंट। मिक्स फीचर्स स्पेसिफायर्स फॉर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, acute or persistent specifiers for adjustment disorder, acute or persistent specifier for adjustment disorders. The next is narcolepsy disorder specifiers, and the last one is post transition specifiers for gender dysphoria. So these are the changes that have been made in specifiers. So viewers, I am going to sum up this video by asking a question that what have you learned from this video. अगर हम overall फिर से क्रक्स की बात करें कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, तो हमने सीखा है कि जो चेंजेस जितनी भी हुई हैं DSM में, DSM के nomenclature में, specifiers में, coding notes में, वो केयरफुल ऑब्जर्वेशंस के बाद, प्रॉपर रिसर्च के बाद और DSM 5th की शॉर्ट कमिंग्स को मद्देनजर रखते हुए की गई हैं। अलॉन्ग विद दैट जो भी अपडेट्स हुई हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में या टेक्सोनोमिक क्राइटेरिया में, वो ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को कि वो डिफरेंट मेंटल कंडीशंस को डीपली असेस करें। एडिशनली जो चेंजेस हुई हैं वो आफ्टर प्रॉपर रिव्यू की गई हैं, आफ्टर रिव्यूइंग द कल्चरल, रेशियल एंड एथनिक फैक्टर्स। And gender inclusive language has been added to reduce the stigma. एक स्टिग्मेटाइज किया जा रहा था, उन टर्म्स को चेंज किया गया है, जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया है ताकि स्टिग्मा को रिड्यूस किया जाए, to clarify that these aspects of a person are not selected by their choices. And one more thing, I have discussed prolonged disorder. थोड़ा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एक्सप्लेन करना चाहूँगी। प्रोलॉन्ग डिसऑर्डर बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें परसिस्टेंट ग्रीफ होता है फॉर 12 months फॉर एडल्ट्स एंड फॉर 6 months फॉर चिल्ड्रन ओवर अ लॉस ऑफ लव्ड वन। इसमें ये भी आता है क्राइटेरिया कि वो किसी और डिसऑर्डर की वजह से ना हो और आपकी डे टू डे फंक्शनिंग को डिस्टर्ब किया हो। ये सारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर का। So I'm going to sum up कि ये DSM
एडिशन जो हमारे पास आया है ये बहुत हेल्पफुल होगा और ये अप टू डेट है और इसमें रिसर्च और केयरफुल ऑब्जर्वेशंस की गई हैं, जिसके बाद इस DSM में टेक्स्ट और नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया है. So we have to understand this concept thoroughly by reviewing this DSM. और ये अब मार्केट में अवेलेबल है और इवन 18 मार्च को प्रॉपरली अनाउंस किया गया है कि आप ऑनलाइन बुकिंग्स करा सकते हैं DSM-V-TR की, जो कि ऑनलाइन अभी अवेलेबल हैं और मार्केट में जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगी. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो. अगर आप मज़ीद डिफरेंस को समझना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DSM-4 एंड DSM-5, तो वो भी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Don't forget to subscribe my channel, like and share this video so that others can get the benefit too. Thank you for watching.